अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं हमारा पहला टॉपिक था केमिकल रिएक्शंस। हमने देखा केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। जैसे केमिकल रिएक्शंस में हम लेते हैं न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्मड फर्स्ट। सेकंड थिंग, देयर इज rearrangement of atoms. Number third, there is breaking and making of bonds. The substance which are involved in a chemical reaction which recombine with each other, उनको हम बोलते हैं reactants, and new substance with new properties which are formed, उनको हम बोलते हैं products. जो reactants होते हैं उसको हम reaction के लेफ्ट साइड में लिखते हैं और products जो नए बनते हैं they are separated by an arrow from the reactants. और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है chemical properties that are totally different from that of the reactants. Now coming to the next topic, our next topic is types of chemical reactions. As you know, there are 5 types of chemical reactions. Number 1 is combination reaction. Number 2 is decomposition reaction. Number 3 is displacement reaction. Number 4 is double displacement reaction, and number 5 is oxidation and reduction reactions. Coming to the first, combination reaction. First, let me tell you what combination means. Combination means to combine, एक दूसरे से मिलना. जब हम डिफरेंट सब्सटेंस को एक दूसरे से मिलाते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन, वहाँ कुछ नई चीज़ें बनती हैं. हम देखते हैं जो ये केमिकल रिएक्शन होती है इनमें होता क्या है. वी आर टॉकिंग ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के उनको क्या बोलते हैं? हाउ वी डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? दीज आर द रिएक्शंस इन विच टू आर मोर सब्सटेंसेस combined to form a single substance. ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को हम मिलाते हैं जिनसे एक नया सब्सटेंस बनता है. जो ये नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होती है फ्रॉम दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स. उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो रिएक्टेंट से नहीं मिलती है. फॉर एग्जांपल विल टेक magnesium. When magnesium ribbon हम बर्न करते हैं in presence of oxygen, it burns with a bright flame, bright white flame. बनाता है magnesium oxide. This magnesium oxide. So when we combine magnesium with oxygen, it results in the formation of मैग्नीशियम ऑक्साइड. जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है. क्या होता है? वाइट प्रेसिपिटेट. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने डिफाइन की थी जब हम दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाते हैं एक नया सब्सटेंस बनता है. हमने यहाँ देखा हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में मिलाया और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रिपेयर हो गया. नेक्स्ट हम देखेंगे व्हेन hydrogen combines with oxygen to form water. हाइड्रोजन किससे कंबाइन करता है? ऑक्सीजन से. और किस में तब्दील होता है? to form water. Here we take H2 plus O2. ये क्या देता है हमें? H2O. So in order to make the number of atoms equal both on reactant side and product साइड, हम क्या करते हैं? हम इसको by adding suffix or by adding numbers so that the number of atoms on the reactant side and the number of atoms on the product side becomes equal. इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन या दूसरा नाम कहते हैं हम इसको मास बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. नंबर 3 हम देखते हैं when hydrogen combines with chlorine to form a
हाइड्रोजन क्लोराइड। चूंकि जो हाइड्रोजन होता है इट एग्जिस्ट इन ए मॉलिक्यूलर फॉर्म, सो वी राइट हियर H2 is a gaseous substance plus it reacts with a chlorine, that too is a gaseous substance. So when H2 and Cl2 combine together, they result in the formation of a new substance or a salt, acid called hydrogen chloride. This hydrogen chloride is an ionic compound. So here we say the combination reaction as we defined it, when two or more substances combine to form a single substance. Here we also see that hydrogen plus chlorine have combined to form a hydrogen chloride. Similarly, we take the case of a sodium metal. When sodium metal is burnt in chlorine to form a sodium chloride. This sodium metal sodium metal is a solid, it's a soft metal. When it reacts with a chlorine gas, it results in the formation of a sodium chloride. This sodium chloride is a salt and it's an ionic compound. So here we say that sodium metal and chlorine gas, when they combine, they result in the formation of a new compound called sodium chloride. The properties of this compound are totally different from that of its reactants. Here we say the reactant sodium and chlorine. Sodium being a metal has the property to lose the electrons, and chlorine being a non-metal has the property to gain the electrons. When sodium loses the electron, only then chlorine can gain electron, or when chlorine is there to accept the electron, only then sodium can lose the electron. So it results in the formation of a new substance called sodium chloride. This sodium chloride is an ionic compound. Its property are totally different from that of the reactant. So आज हमने जो पढ़ा है it's called combination reaction. कल हम देखेंगे next topic.